हेलो। हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग अजय। हेलो। गुड इवनिंग। हेलो हेलो गुड इवनिंग। ठीक है, वेट करते हैं। ठीक है, 2-3 मिनट का। ठीक है, ताकि बाकी लोग भी ज्वाइन कर ले, फिर वी विल स्टार्ट आज का इंट्रो सेशन, है ना। स्टार्टिंग फ्रॉम यूरोन प्लेटफॉर्म टू बैच में क्या पढ़ने वाले हैं, क्या रहने वाला है। ठीक है, वो सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, लेट मी ऑल्सो क्लियर वन थिंग कि आज का इज मोस्टली इंट्रोडक्शन सेशन, है ना। तो देर इज नो डायरेक्ट ऐसा कि लेट्स जंप डायरेक्टली इनटू टॉपिक, है ना। तो आज का सेशन इज मोस्टली रिलेटेड टू आपके डाउट्स मोबाइल डेवलपमेंट को लेके, हाउ वेब इज डिफरेंट फ्रॉम मोबाइल, हाउ मोबाइल इज डिफरेंट फ्रॉम वेब, ये सारी चीजें। ठीक है, लेट मी ऑल्सो शेयर माई स्क्रीन। मेरे को बताना इफ यू गाइस कैन सी माई स्क्रीन। ओके। ओके, एंड हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम लाइक टेक बैकग्राउंड? क्या कोई बता पाएगा मेरे को? I know some from my past batches. ठीक है, चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट सारा कुछ। ठीक है, आई विल गिव यू स्मॉल इंट्रो कि यूरॉन क्या है बेसिकली, है ना। चलते हैं। देखिए, मुझे नहीं पता आप लोग कितने यूरॉन को ऑलरेडी पहले से जानते हैं, कितने लोग नहीं जानते हैं, वो मेरे को आइडिया नहीं है, बट मैं इन जनरल सबके लिए बता देता हूँ। ठीक है, बेसिकली यूरॉन एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको सारे के सारे टेक रिलेटेड आपको कोर्सेज मिल जाते हैं। ठीक है, फ्रॉम लाइव क्लासेस टू सेल्फ प्लेस्ड कोर्सेज आपको सारे मिल जाते हैं। ठीक है, वेबसाइट है यूरोन.वन, आप लोग देख पा रहे होंगे मेरे होम पेज पे, मेरे बेसिकली ब्राउजर पे आप सबको विजिबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सारे के सारे कोर्स मिल जाएंगे रिलेटेड टू टेक। आपका चाहे वेब डेवलपमेंट हो, चाहे मोबाइल डेवलपमेंट हो, चाहे एआई हो, चाहे क्लाउड का हो, आपको मेजरली सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखो, यूरोन सिर्फ एक कोर्स प्लेटफॉर्म नहीं है, ठीक है ना, इस चीज का ध्यान रखना आप लोग। यूरोन इज बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको चाहिए और वो आपको बाकी सारी चीजें कंबाइन करके लाके देता है। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम आपका इंटरव्यूअर, आपका एआई रिज्यूम, आपका चैट, ठीक है, आपके लिए प्रोजेक्ट्स, आपके लिए जॉब्स, तो एक बेसिकली कंप्लीट एक होलसम प्लेटफॉर्म है। ठीक है, जो आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड करता है अपार्ट फ्रॉम कोर्सेज। ठीक है, मतलब कोर्सेज भी हैं और उसके साथ ये सारा कुछ ही आपको मिल जाता है। ठीक है, अगर आप लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे होंगे, ठीक है, मेरी स्क्रीन पे आप लोग को सारे ही दिख जाएंगे। ठीक है, ऊपर ये जो स्क्रोलर है इसमें सारे के सारे आपको लाइव कोर्सेज मिल जाएंगे। ठीक है, जो हम लोग पढ़ा रहे हैं, जो अभी हमारे करंटली रनिंग है, वो सारे बैचेस आपको यहाँ पे और कोर्सेज आपको सारे मिल जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली आप भी एक्सप्लोर कर सकते हैं अगर आपको किसी कोर्स के बारे में जानना है। ठीक है, आप थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो देन वी हैव यूरॉन कंसल्टेंसी, कि इफ यू वांट कि भाई आपको टीम हायर नहीं करना है, यू वांट योर प्रोजेक्ट टू बी बिल्ड, तो वी डू दैट इन यूरॉन कंसल्टेंसी। तो इफ यू आर लुकिंग आउट कुछ ऐसा एक प्लेटफॉर्म, तो देन ऑल्सो यू कैन गो एंड चेक आउट यूरॉन कंसल्टेंसी। ठीक है, देन वी हैव यंग यूरॉन। ठीक है, जो बेसिकली स्मॉल बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए। ठीक है, वी टीच देम एआई बेस्ड लर्निंग और इस टाइप की सारी चीजें। ठीक है, फ्रॉम ग्रेड 6 टू ग्रेड 12, उन सब बच्चों को वी गिव एक्सपोजर इन सारी चीजों का। ठीक है, तो इफ यू हैव समवन जो इंटरेस्टेड रहेगा यंग यूरोन में, तो मेक श्योर कि आप चेक कर लें ये सारी चीजें, एंड इट इज वेरी इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, देन इफ यू चेक दिस साइड बार ना, साइड बार में आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, तो अभी के टाइम पे यूरोन में ना वी हैव रिसेंटली लॉन्च्ड आउट कि भाई कम्युनिटी है ना, वी क्रिएट कम्युनिटी ऑफ, लेट्स से जैसे मेरा पास्ट बैच था वेब डेवलपमेंट, तो देयर इज अ वेब डेवलपमेंट कम्युनिटी। ठीक है, जहाँ पे लोग आते हैं कम्युनिटी में, दे स्टार्ट पोस्टिंग समथिंग। ठीक है, तो उस टाइप का आपको कम्युनिटी का प्लेटफॉर्म आपको यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, जैसे सिमिलर टू अदर प्लेटफॉर्म्स होते हैं कम्युनिटी वाले। ठीक है, जैसे यहाँ पे वी हैव एआई मास्टरी का, वी हैव मोबाइल डेवलपमेंट का। ठीक है, जिसमें टोटल 28 पोस्ट है। सिमिलरली आप भी पोस्ट कर सकते हैं, इफ समवन वांट टू कमेंट, लाइक, शेयर, वो सारा कुछ इसमें आपको अवेलेबल मिल जाता है। ठीक है, काफी अच्छा कम्युनिटी का सेक्शन है, मेक श्योर टू चेक आउट। ठीक, काफी इंटरेस्टिंग चीज है, हम लोग भी पोस्ट कर रहे होते हैं इसमें, है ना।
मोबाइल डेवलपमेंट वाले उसमें एंड वेब डेवलपमेंट वाले सेक्शन में। तो ये कम्युनिटी का है, ठीक है। देन आई हैव टोल्ड यू कि भाई यूरॉन कंसल्टेंसी क्या है। इफ यू वांट टू बिल्ड योर टेक प्रोडक्ट एंड यू डोंट वांट टू हायर अ टीम, देन दैट थिंग वी डू इन बेसिकली यूरॉन कंसल्टेंसी, ठीक है। देन वी हैव दिस लाइव कोर्सेज का एक सेक्शन है इसमें, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। देन वी हैव लाइव कोर्सेज का सेक्शन एक बेसिकली, ठीक है, जहां पे सारे के सारे आपको लाइव कोर्सेज आपके मिल जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। देन वी हैव सेल्फ प्लेस्ड कोर्सेज कि भाई इफ देयर इज समवन जो कि लाइव कोर्सेज नहीं ज्वाइन कर पा रहा है, देयर आर अदर चीजें भी, अदर कोर्सेज जो छोटे छोटे होते हैं, वी लॉन्च देम इन सेल्फ प्लेस्ड सेक्शन। तो देन ऑल्सो यू कैन चेक आउट ए सेल्फ प्लेस्ड वाला सेक्शन। दीज आर बेसिकली स्मॉल कोर्सेज एंड अदर कोर्सेज जो नहीं होते हैं, ठीक है। तो वी हैव सेल्फ प्लेस्ड कोर्सेज एज वेल, जो आप अपने बिहाफ पे लर्न कर सकते हैं। इफ यू डो नॉट वांट टू, है ना, इफ यू डोंट हैव टाइम कि भाई मेरे को 7 to 9 ब्लॉक हो जाऊंगा मैं, है ना, एंड यू वांट टू लर्न एट योर ओन पेस, तो दो कोर्सेज आप चेक कर सकते हैं सेल्फ प्लेस्ड कोर्सेज के अंदर, ठीक है। देन यंग न्यूरॉन में आपको बता चुका हूँ, काफी इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। छोटे बच्चों के लिए भी टीच देम आपका सारा एआई बिल्डिंग एंड ये सारी चीजें, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप चेकआउट कर लें एक बार इस चीज को, ठीक है। इसके बाद वी हैव सबसे इंटरेस्टिंग चीज, जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे यूरोन के प्लेटफॉर्म में, ठीक है, वो मैं बता देता हूँ। हम लोग के पास अपना एक खुद का चैट सिस्टम है, ठीक है, दैट इज यूरी एआई, ठीक है, जहां पे आपको सारे के सारे मॉडल्स मिल जाते हैं। मतलब सारे नहीं बोलूंगा, मेजोरिटी ऑफ आपको मॉडल्स मिल जाते हैं चैट करने के लिए। जैसे आप जीपीटी पे अलग जा रहे हैं, जेमिनाई पे अलग जा रहे हैं कुछ चीज पूछने के लिए, क्लाउड पे अलग जा रहे हैं, तो उस टाइप वो सारे मॉडल्स हमने यहाँ पे कंबाइन करके मेजरली एक प्लेटफॉर्म में रखे हुए हैं, ठीक है, विद एक बहुत ही डिसेंट कोटे के साथ है, ठीक है। ताकि यू आर लाइक आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स ना यूज करके यू आर जस्ट स्टिक ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म एंड सारे मॉडल्स आप वहां पे चेक कर सकते हो, ठीक है। जैसे अपने पास यहाँ पे जीपीटी का सीरीज है, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 5.1 मिनी है, अपने पास 5 है, देन वी हैव जेमिनी का सीरीज एज वेल। तो उसको यूज करके यू कैन चेक कि आपको जो भी चेक करना है, ठीक है, सिमिलर टू जीपीटी एंड ऑल, बट सारे मॉडल्स कंबाइंड एक प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो ये अपना यूरी एआई है, काफी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। देन इसमें सबसे और भी इंटरेस्टिंग एक चीज मैं आपको बताता हूँ ना, यूरॉन में अपने पास क्या है, वी हैव इमेज जनरेशन, ठीक है। आप यहाँ पे प्रॉम्प्ट ऐड करके अपना इमेज जनरेट करवा सकते हो। आप उसको एस्पेक्ट रेशियो एंड सब कुछ बता सकते हो कि भाई कितना मेरे को इमेज जनरेट करवाना है, ठीक है, मतलब काउंट कि आप एक इमेज चाहते हैं, दो इमेज चाहते हैं, वो सारा आप करवा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। देन यू कैन एडिट इमेज, कि आपका कोई इमेज है, आप उसको ऑल्टर करना चाह रहे हो थोड़ा, तो उसको आप करवा सकते हो। आपने अगर कोई इमेजेस बनाई होंगी तो वो इमेजेस आपको हिस्ट्री वाले सेक्शंस में मिल जाएंगे, ठीक है। तो वी डू प्रोवाइड इमेज जनरेशन वाली चीज भी इसमें, ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग है, आप लोग चेकआउट करना, ठीक है। देन वी हैव इंटर्नशिप का पोर्शन, ठीक है, सेक्शन बेसिकली बताऊंगा मैं। अब क्या होता है ना, देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो नॉन टेक से आ रहे होते हैं, ठीक है, जिनका इंटर्नशिप नहीं लगता है, जिनको प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे होते हैं, ठीक है, जिनको वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा होता है। तो हमारे पास यहाँ पे इंटर्नशिप का पोर्टल है, ठीक है। यहाँ पे आप अपने डिफिकल्टी, अपने नीश के रिगार्डिंग, कि भाई मेरे को इस नीश में, इस टेक स्टैक में मेरे को प्रोजेक्ट बनाना है, तो उसके रिगार्डिंग आप यहाँ पे इजिली कोई भी प्रोजेक्ट अपना सॉर्ट एंड फिल्टर कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स से मेरे को रिएक्ट में कुछ बनाना है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको वो सारे के सारे प्रोजेक्ट मिल जाएंगे, ठीक है। आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। आप इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको पीआरडी, जो प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट डिटेल्स होती है, बिजनेस रिक्वायरमेंट डिटेल्स होती है, आपको सारी कुछ इसमें मिल जाती हैं, ठीक है। एंड आपको ऑफर लेटर, ये सारी चीजें इसमें मिल जाती हैं, ठीक है। तो आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। आपको कौन सा टेक स्टैक चूज करना है, आप किस नीश में बनाना चाह रहे हैं। जैसे किसी को हेल्थ केयर में इंटरेस्ट आता है, ठीक है, टू बिल्ड हॉस्पिटल मैनेजमेंट एप्लीकेशन, आपका अपॉइंटमेंट बुकिंग सिस्टम, किसी को किसी और नीश में इंटरेस्ट होता है, ठीक है, लेट्स से सिर्फ सीएमएस प्लेटफॉर्म बनाने में, तो उस टाइप के प्रोजेक्ट्स आप यहाँ पे एनरोल करके बना सकते हैं, ठीक है। काफी इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म है, आई रिकमेंड काफी सारे लोगों को ये वाला प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप लोग एक बार चेकआउट करना, काफी इंटरेस्टिंग है, ठीक है, अपना इंटर्नशिप का पोर्टल। एंड देन उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म ना अपने पास ये है, रेज्यूम बिल्डर, ठीक है। यहाँ पे आप एआई को चीजें बताकर रेज्यूम बनवा सकते हैं, ठीक है। कोई आपको नया रिज्यूम बनवाना है, या लेट से इफ यू वांट कि भाई मेरे पास मेरा पुराना रिज्यूम है और मेरे को अब इसको थोड़ा अपडेट करवाना है, ठीक है, ऑल्टरेशन करवानी है मेरे को, तो दैट ऑल्सो यू कैन डू, ठीक है, कि भाई मेरे को नया रिज्यूम बनाना है, ठीक है। आप कोई टेम्पलेट चूज कर लो, जैसे सपोज मेरे को ये वाला टेम्पलेट चूज करना है, आप यहाँ पे अपना डिटेल्स पास करो कि मेरा डिटेल्स क्या है। इस तरीके से अपने पास टोटल नंबर ऑफ आई गेस 6 to 7 स्टेप्स हैं अपने पास, ठीक है। वो सारा आप इसमें प्रोफाइल ऐड करते हो कि भाई मेरा नेम क्या है, फुल नेम क्या है, सारी डिटेल्स आप पास करते हो, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, देन यू पास कि मैंने किस प्रोजेक्ट पे काम किया है, मेरा क्या एक्सपीरियंस है, तो यू गेट अ वेल क्राफ्टेड रिज्यूम एआई की मदद से, ठीक है। काफी इंटरेस्टिंग है, इफ यू डू नॉट वांट टू इन्वेस्ट टाइम,
अपना रिज्यूम और सीवी को मैन्युअली क्रिएट करने के लिए, देन मेक श्योर कि आप अपना यूरॉन का ये एआई रिज्यूम भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, देन अपने पास है एक जॉब पोर्टल। ठीक है, जहां पे हमारे पास सारी की सारी जॉब्स यहाँ पर पोस्टेड रहती हैं। ठीक है, यूरॉन में हम लोग जो ऐड करते रहते हैं वो सारी जॉब्स आपको जॉब वाले पोर्टल में मिल जाएंगी। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास है सबसे इंटरेस्टिंग पोर्शन, दैट इज एआई पावर्ड इंटरव्यू। ठीक है, अब ये वाला फीचर हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्यों, मैं बताता हूँ। यहाँ पे आप अपना सीवी अपलोड कर सकते हो। ठीक है, एंड आफ्टर अपलोडिंग योर सीवी और जॉब डिस्क्रिप्शन, बेसिकली यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म आप इंटरव्यू कर सकते हो, बिल्कुल एक रियल जैसे इंटरव्यूअर बैठता है, सेम उसी फॉर्मेट में। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म है। अगर किसी को लेट्स से सिर्फ एआई इंटरव्यू प्रैक्टिस करनी है कि कैसे कम्युनिकेट करना है, कि मेरे से क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाए, तो मेक श्योर कि आप ये अपना अपनी प्लेटफॉर्म यूज करना। एआई पावर्ड है, काफी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, जैसे आजकल टाइम में बहुत सारे हैं मार्केट में ना एआई प्लेटफॉर्म, बस 2000 पेड। ठीक है, तो वी हैव ये सारा चीज अपना सिर्फ यूरॉन में। ठीक है, कि भाई आप किसी कोर्स में एनरोल होते हो, यू हैव योर पूरे ईयर का सब्सक्रिप्शन, तो यू गेट ये सारा कुछ होलसम प्रोडक्ट जो आपको चाहिए, है ना। स्टार्टिंग फ्रॉम अ फ्रेशर कि भाई मैं अपने आप को वेल प्रिपेयर करके ले जा सकूं, मेरे पास पर्सनल प्रोजेक्ट्स हो खुद के, वो आपको इंटर्नशिप से मिल जा रहे हैं। रिज्यूम आप अपना वेल प्रिपेयर करके बना ले रहे हो, ठीक है, अपने एआई रिज्यूम बिल्डर से, एंड देन आप जॉब के लिए प्रैक्टिस कर ले रहे हो, लेट्स से कोई जॉब डिस्क्रिप्शन अपलोड करके एंड अपना रिज्यूम अपलोड करके वाया दिस एआई पावर्ड इंटरव्यू, अपना जो अवनी प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो यू गेट सारा कुछ अपने सिंगल प्लेटफॉर्म में, आपको इधर उधर जाने का कहीं नीड नहीं पड़ता। ठीक है, तो काफी इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, जो नहीं जानते होंगे मेक श्योर करना चेकआउट करने के लिए। ठीक है, काफी मजा आएगा आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म को यूज करने में। ठीक है, एक बार चांस देके ट्राई करना। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, अब चलते हैं अपने दूसरे चीज के ऊपर। ठीक है, दैट इज अपना मोबाइल डेवलपमेंट का कोर्स। ठीक है, एंड लेट मी बी ऑनेस्ट, आज का इज सिर्फ इंट्रोडक्शन सेशन। ठीक है, आई विल बी टेलिंग यू कि भाई कैसे इन्वायरमेंट सेटअप करना है, क्या चीजें हैं। आई विल बी टेकिंग योर डाउट्स कि भाई वेब कैसे डिफरेंट है, मोबाइल कैसे डिफरेंट है, व्हाट इज रिएक्ट, व्हाट इज रिएक्ट नेटिव, कुछ और फ्रेमवर्क क्यों नहीं। ठीक है, तो वो सारे डाउट्स लूंगा। आप कुछ आई विल टेल कि भाई कोर्स में क्या है, क्या हम लोग बनाने वाले हैं, किस टाइप के प्रोजेक्ट्स हम लोग लेने वाले हैं, डिप्लॉयमेंट कहाँ कहाँ पे होगा। ठीक है, क्या सिर्फ एक डिप्लॉयमेंट होगा कि हम सब कुछ सीखेंगे, सीआईसीडी क्या है, वो सब आई विल बी टेलिंग यू आज के इसमें। ठीक है, इंट्रोडक्शन सेशन में। ठीक है, चलते हैं थोड़ा समझते हैं इसके बारे में, फिर आई विल बी टेकिंग आप सब लोगों के डाउट्स। ठीक है, अब देखो, हम लोगों ने यूरॉन में लास्ट टाइम, अभी लास्ट मंथ हम लोगों ने एक बैच कवर किया था, दैट वाज फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट। ठीक है, दैट वाज मोस्टली रिलेटेड टू वेब। ठीक है, मॉडर्न स्टैक का था उसमें सारा। अभी वी हैव डिसाइडेड कि भाई लोगों को मोबाइल का टेस्ट भी देना है। ठीक है, कि हाउ मोबाइल इज डिफरेंट, क्योंकि अगर आप लोग आज के टाइम में देखोगे, वेब में बहुत कुछ है। ठीक है, वेब में बहुत लोग भी हैं। ठीक है, बट अगर आप मोबाइल के मार्केट को कंपेयर करते हैं, तो मोबाइल के मार्केट में उतने डेवलपर्स नहीं हैं। डेवलपर्स हैं बट उतने नहीं हैं एज कंपेयर टू वेब। ठीक है, सो वी डिसाइडेड कि भाई वी विल बी लॉन्चिंग एक अपना मोबाइल डेवलपमेंट का कोर्स, एंड वी विल बी टेलिंग स्टूडेंट्स कि भाई मोबाइल में भी बहुत अच्छा स्कोप है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई वी हैव दिस मोबाइल डेवलपमेंट का कोर्स यूजिंग रिएक्ट नेटिव। ठीक है, अब देखो, कोर्स आपका है इंग्लिश में। ठीक है, इट इज इंग्लिश इंग्लिश वट एवर कम्युनिकेशन वी हैव। ठीक है, एंड स्टार्ट डेट आज का ही है, बेसिकली दैट्स व्हाई वी आर इन इंट्रोडक्शन सेशन। टाइमिंग यू ऑल नो कि भाई 7 to 9 PM है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, सैटरडे एंड संडे। ठीक है, इफ रिक्वायर्ड बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स वी टेक क्लासेस ऑन वीकडेज, वो मैं अपने आप एक्सटेंड कर देता हूँ। ठीक है, बिकॉज आई एम द इंस्ट्रक्टर। ठीक है, बेस्ड ऑन स्टूडेंट प्रेफरेंस आई एम कंप्लीटली फ्लेक्सिबल। ठीक है, अब चलते हैं सबसे इंटरेस्टिंग चीज के ऊपर, दैट इज द कोर्स कंटेंट। ठीक है, कि भाई व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस एंटायर कोर्स, वो थोड़ा समझते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच। देखो, सबसे पहले वी विल नॉट बी जंपिंग कि भाई इन्वायरमेंट सेटअप करना है या व्हाट वी नीड टू। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी अंडरस्टैंडिंग कि वाई वेब एंड वाई मोबाइल। ठीक है, वेब अपनी अलग जगह पे स्टैंड करता है, मोबाइल अपनी अलग जगह पे स्टैंड करता है। ठीक है, हाउ योर मोबाइल इज डिफरेंट, बिकॉज जब आप बोलते हैं कि भाई रिएक्ट है एंड देन वी हैव रिएक्ट नेटिव, तो बहुत लोग बोलते हैं कि भाई रिएक्ट ही तो है, यू जस्ट राइट उसको नेटिव में लिखना चालू कर देता फॉर मोबाइल। ठीक है, बट ऐसा नहीं होता है। ठीक है, देयर इज डिफरेंस। ठीक है, वो हम लोग समझेंगे। ठीक है, सब कुछ भी करने से पहले। ठीक है, क्या क्या टूल्स का आपको रिक्वायरमेंट होता है, दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। ठीक है, कि भाई
मेरे को रिएक्ट नेटिव से मोबाइल डेवलपमेंट करनी है, बट इज इट जस्ट गोइंग टू बी फॉर वेब, सॉरी फॉर एंड्रॉइड, और इज इट जस्ट गोइंग टू बी फॉर iOS? ठीक है, तो दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि भाई कि सिर्फ एंड्रॉइड रहेगा, सिर्फ iOS रहेगा, या क्रॉस प्लेटफॉर्म रहेगा। ठीक है, जैसे आप लोगों ने और भी सुना होगा कि वी हैव फ्लटर एज वेल। ठीक है, तो वो हम लोग इसमें समझ रहे होंगे कि भाई एंड्रॉइड के लिए क्या टूल रिक्वायर्ड है, iOS के लिए क्या टूल रिक्वायर्ड है, क्या मेरे को अलग अलग कोड बेस लिखना पड़ेगा या मेरे को सिंगल कोड बेस लिखना पड़ेगा, वो हम लोग समझेंगे। ठीक है, कैसे यूआई चलता है वो हम लोग सारा समझेंगे। ठीक है, तो पूरा इकोसिस्टम हम लोग समझेंगे। ठीक है, रिएक्ट नेटिव से रिलेटेड। ऑल्सो रिएक्ट नेटिव के भी दो वेरिएंट होते हैं। एक पुराना वेरिएंट होता है आपका CLI, एक आपका नया वेरिएंट है जिसमें आप एक्सपो फ्रेमवर्क का यूज कर रहे होते हैं। वो हम लोग समझेंगे, किस चीज को कब यूज करना है वो भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, टूल्स के बारे में समझेंगे कि भाई क्या क्या टूल्स अपने को रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, टूल से मेरा मतलब है जैसे आप अगर विंडोज में डेवलपमेंट करें, सपोज आपके पास विंडोज का सिस्टम है, ठीक है, तो देन आपको iOS वाले टूल सेटअप करने का रिक्वायरमेंट नहीं होता, बिकॉज वहां पे आपके पास ऑप्शन नहीं होता है। ठीक है, तो सिर्फ एंड्रॉइड, अगर आप सिर्फ विंडोज में तो व्हाट आर टूल्स आपको क्या रिक्वायर्ड है, अगर आप सिर्फ iOS में तो आपको दोनों के टूल्स रिक्वायर्ड हैं। बट iOS के लिए व्हाट इज ऐप, ये आपका ऐप स्टोर कनेक्ट, एक्स कोड क्या होता है, ठीक है, वो सारी चीजें, एंड्रॉइड स्टूडियो क्या है, कैसे आप एम्यूलेटर बनाएंगे। ठीक है, क्या जरूरत है मतलब आपको डिवाइस को इसमें चलाने का। ठीक है, रियल डिवाइस पे कैसे एप्लीकेशन को रन करेंगे, वो सारा कुछ हम लोग समझेंगे। ठीक है, रिएक्ट के बारे में थोड़ा सा समझेंगे, बिकॉज रिएक्ट नेटिव का आप ऐप बना रहे हैं, रिएक्ट नेटिव में रिएक्ट आता है, तो जाहिर सी बात है रिएक्ट का आइडिया होना चाहिए, तो हम लोग थोड़ा रिएक्ट का आइडिया लेंगे कि भाई रिएक्ट है क्या, सारा कुछ इन्वायरमेंट सेटअप करने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर है पूरा रिएक्ट नेटिव का इकोसिस्टम। ठीक है, उसके टूल्स की अपने को क्या क्या रिक्वायर्ड है। ठीक है, एंड यस, अभी के टाइम में एट प्रेजेंट आई एम ऑन विंडोज, बट कोर्स दोनों प्लेटफॉर्म्स पे चलेगा, ऑन एंड्रॉइड एज वेल एज ऑन iOS। आई डू हैव मैक एज वेल। ठीक है, तो मैं सब चीजें ही बता दूंगा। ठीक है, देन वी हैव गिट एंड गिटअप का थोड़ा वर्क फ्लो, बिकॉज जब आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो जाहिर सी बात है कोड आपका जितना भी होता है दैट इज प्रेजेंट ऑन योर, किस पे, गिट गिटअप पे। ठीक है, इस टाइप की किसी और सर्विस पे, लेट्स से बिट बकेट हो सकता है, गिट लैब हो सकता है। ठीक है, तो वो हम लोग थोड़ा समझेंगे कि भाई कैसे काम करना है, कैसे गिट को यूज करना है, व्हाट इज गिट, कैसे रिपोजिटरी बनाना है, PR कैसे करना है। ठीक है, वो सारा कुछ हम लोग समझेंगे। फिर थोड़ा प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे कि भाई कोई एक छोटा प्रोजेक्ट होता है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट होता है, उसका प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर कैसे रखना है, चीजों को कैसे डिफाइन करके रखना है। ठीक है, चीजों को कैसे डिफरेंशिएट करना है कि भाई मेरा, जैसे वेब में आप लोग पेजेस बनाते हो, इसमें भी आपकी पेजेस होते हैं। ठीक है, बट दोज आर कॉल्ड स्क्रीन्स। यहाँ पे स्क्रीन्स कहाँ पे रखनी है, कंपोनेंट कहाँ पे जाएगा, रियूजेबल कंपोनेंट्स कैसे बनाओगे, वो सारा चीज। ठीक है, API कहाँ पे कॉल करोगे, क्या पैकेज आप यूज करोगे, वो सारा कुछ हम लोग प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में समझाएंगे। ठीक है, देन यहाँ पर है आपका रिएक्ट एंड रिएक्ट नेटिव का फाउंडेशन। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अब यहाँ पे रिएक्ट प्लस रिएक्ट नेटिव फाउंडेशन क्यों है, डायरेक्टली रिएक्ट नेटिव फाउंडेशन क्यों नहीं? बिकॉज आपका जो रिएक्ट नेटिव है उसका सारा का Jawab सारा tadi, जो paten apa? जो भी Itu तरीका है, ngomong ini lah. Apa gitu loh tuh. अ, Problem itu loh. Dan mau tahu. Good. ठीक ठीक है, जो आपका रिएक्ट नेटिव है, ठीक है, उसको लिखने का स्टाइल बिल्कुल आपका रिएक्ट के जैसा है, जो कि फ्रंट एंड लाइब्रेरी है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट का लाइब्रेरी है, बिल्कुल उसके जैसा ही सिंटेक्स हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है, बट विद स्मॉल डिफरेंस। ठीक है, वहां रिएक्ट में आप सिर्फ वेब का लिख रहे होते हो, रिएक्ट नेटिव में आप मोबाइल स्पेसिफिक चीजें लिख रहे होते हो, तो हम समझेंगे क्या है। ठीक है, स्टाइलिंग का कंसेप्ट हम लोग समझेंगे कि भाई रिएक्ट नेटिव में क्या कंपोनेंट्स हैं, मतलब एंड्रॉइड के लिए क्या यूज करना है, iOS के लिए क्या यूज करना है, इसमें स्टाइलिंग कैसे करनी है। जैसे वेब में आप स्टाइलिंग करते हो, वेब का स्टाइलिंग थोड़ा डिफरेंट होता है, वहां पे आपके पास फ्लेक्स बॉक्स होता है, ग्रिड होता है। ठीक है, बट रिएक्ट नेटिव में क्या होता है, क्या रिएक्ट नेटिव में भी फ्लेक्स बॉक्स है, ग्रिड है, या कुछ अलग है, वो हम लोग सारा समझेंगे। ठीक है, कीबोर्ड्स के साथ काम करना सीखेंगे, मतलब मोबाइल में जो आपके कीबोर्ड्स होते हैं, ठीक है, कब आपको नंबर पैड दिखाना है, कब आप फुल फ्लेश्ड कीबोर्ड दिखाएंगे। ठीक है, तो वो सारा कुछ हम लोग इसमें समझेंगे, एक्सेसिबिलिटी सब कुछ A to Z। ठीक है, ये रहेगा आपका सबसे एकदम फाउंडेशन मॉड्यूल। ठीक है, देन वी हैव थर्ड मॉड्यूल जो है नेविगेशन। अब देखो, नेविगेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन के केस में नेविगेशन का मतलब कि भाई आप अपने एप्लीकेशन में फ्रॉम एक पेज, या बोलो आप एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर जंप कर कैसे रहे हो, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत सुनने में लगता है कि आसान है, ठीक है, बट जब आप बहुत डिफरेंट टाइप के मोबाइल प्लेटफॉर्म्स आप ट्राई करते हो ना, तो आपको पता चलता है कि भाई मोबाइल का UI भी बहुत डिफरेंट होता है। ठीक है,
मोबाइल में आप देखते हो, अगर आप सपोज इफ यू आर ओपनिंग इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम में नीचे टैब्स होते हैं, वो टैब्स कैसे बनते हैं, ठीक है। अगर आप लेट्स से जीमेल चेक करेंगे, जीमेल में इधर हैमबर्गर मेन्यू के 3 बार बने रहते हैं, उस पर आप क्लिक करते हो तो एक साइड से एक ड्रॉअर टाइप का ओपन होता है, वो कैसे मेरे को बनाना है। नॉर्मल नेविगेशन मेरे को कैसे करना है, ठीक है। 3 टाइप के नेविगेशन होते हैं, उनको समझना है कि क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट एपीआई, स्टेट मैनेजमेंट बेसिकली कैसे करना है, ठीक है, दैट कैन बी कॉन्टेक्स्ट एपीआई, रिडक्स, जस्ट एंड, आपके मन में जो है वो इंप्लीमेंट कर सकते हैं, बिकॉज सबका फंडा एकदम सिंपल होता है, सबका फंडा इज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम, ठीक है। इन्वायरमेंट मैनेजमेंट कैसे करना है, जैसे अगर आप किसी एप्लीकेशन को बनाते हो तो एप्लीकेशन में 3 टाइप के इन्वायरमेंट्स आपके चलते हैं। आपका डेवलपमेंट इन्वायरमेंट चलता है, आपका स्टेजिंग चल सकता है, आपका प्रोडक्शन चल सकता है। कैसे आप इन्वायरमेंट मैनेज करोगे, ठीक है, अपने मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर कैसे आप इन्वायरमेंट हैंडल करोगे, ठीक है, सीक्रेट हैंडलिंग कैसे करोगे, तो वो सारा कुछ हम लोग बेसिकली इस मॉड्यूल 3 में कवर करेंगे, ठीक है। दैट इज आपका नेविगेशन एंड ऐप आर्किटेक्चर, ठीक है, बिकॉज मॉड्यूल सेकंड तक आपका एक बेसिक ऐप ही बनता है, ठीक है, एक सिंगल पेज ऐप ही बनता है। जैसे आप रिएक्ट में बोले कि भाई सिंगल पेज एप्लीकेशन, रिएक्ट नेटिव में भी सिंगल पेज स्क्रीन आपका होगा, ठीक है। मॉड्यूल 3 से आप मल्टीपल स्क्रीन, या मैं सिंपली अगर सिंपल भाषा में बताऊं तो मल्टीपल पेजेस बना के काम कर पाऊं, ठीक है, ऑल यहाँ पे पेजेस नहीं होते, ठीक है। मॉड्यूल 4 आपका यूआई के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, बेसिकली एनिमेशंस यूआई की भाई मेरे को कॉमन कलर, या बोलो आप रियूजेबल कलर मेरे को कैसे रखना है, रियूजेबल स्पेसिंग कैसे रखनी है, मैं थीम कैसे बनाऊंगा। जैसे मोबाइल के केस में थीमिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत फेमस है, क्योंकि आपके मेजोरिटी ऑफ एप्स आपके थीम सपोर्ट करते हैं, लाइट लाइट थीम एंड डार्क थीम। वो थीम कैसे मेरे को बनाना है, एनिमेशन मेरे को कैसे करनी है, ठीक है, नॉट वेरी कॉम्प्लेक्स एंड वेरी हेवी एनिमेशन, बट इट कैन बी कोई छोटा एनिमेशन कि भाई लेट्स से मैं प्रोफाइल स्क्रॉल कर रहा हूं तो प्रोफाइल जो पिक्चर होता है वो थोड़ा टॉप पे चला गया आराम से स्मूथ एनिमेशन के साथ, ठीक है, उसका साइज छोटा हो गया, उस टाइप की एनिमेशन हम लोग ट्राई करेंगे, ठीक है। डेटा को कैसे दिखाना है, ऑप्टिमाइजेशन कैसे करनी है, वो सारा कुछ आपका मॉड्यूल 4 में है, बेसिकली मोर ओवर रिलेटेड टू यूआई, ठीक है। मॉड्यूल 5 आपका सबसे इंपॉर्टेंट है एक रियल एप्लीकेशन बनाने के लिए, जिसमें एपीआई इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। एपीआई इंटीग्रेशन का आप देखो, वी हैव 2 थिंग्स, कि आप कोई आपके पास एक अपना खुद का बना हुआ एपीआई हो, ठीक है, लेट्स से नोड में हो सकता है, पाइथन फास्ट एपीआई में हो सकता है, इट कैन बी जावा स्प्रिंग बोर्ड, ठीक है। और देन देयर इज ऑल्टरनेट तरीका कि भाई यू आर यूजिंग एनी बैकएंड एज अ सर्विस प्लेटफॉर्म, लेट्स से इट इज फायरबेस, ठीक है। तो हाउ यू आर गोइंग टू यूज फायरबेस, लेट्स से यू हैव सुपरबेस, यू हैव ऐपराइट, और बहुत टाइप के आपके बैकएंड एज अ सर्विस प्लेटफॉर्म्स होते हैं, आप उनको कैसे यूज करेंगे, ठीक है। तो दैट बैकएंड इंटीग्रेशन हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि भाई थोड़ा एपीआई का फंडामेंटल, अपने को एपीआई कॉल कैसे करनी है रिएक्ट इसमें, रिएक्ट नेटिव में ऑथेंटिकेशन कैसे मैनेज करके चलना है, बिकॉज एपीआई भी बहुत तरीके की होती है, ठीक है। एक आपको टोकन रिटर्न करके देती है, टोकन कहाँ पे रखोगे, कैसे उसको सिक्योर करके रखोगे, वो सारी चीजें, ठीक है। एरर हैंडलिंग करना, इमेज अपलोड करना है, कह लो फाइल अपलोड करना, उसका प्रोग्रेस ट्रैकिंग, ठीक है। अब इस वाले मॉड्यूल 5 में देखो अपने को हेडेक लेने का नीड नहीं है, बिकॉज आई ऑलरेडी हैव अ बैकएंड एपीआई, ठीक है, एक ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म का एपीआई जो कि नोड जेएस में बना हुआ है, ठीक है। तो आई विल बी शेयरिंग दैट, बट आई विल ऑल्सो गिव यू एक फायरबेस का इंट्रो कि हाउ डू यू यूज फायरबेस, ठीक है। देन मॉड्यूल 6 इज बेसिकली रिलेटेड टू आपका डेटाबेस, ठीक है। अब देखो डेटाबेस क्यों, मतलब डेटाबेस व्हाई नॉट इन रेस्ट एपीआई हम लोग समझेंगे, मतलब ऑल्दो रेस्ट एपीआई में अपना डेटाबेस होता है ना, बट ऐसा नहीं होता है। आप लोग अपने एप्लीकेशन में भी, जो आपका मोबाइल एप्लीकेशन है उसमें भी आप लोग ये लगा सकते हो, ठीक है, डेटाबेसेस ऐड कर सकते हो। एंड आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, आप सिक्वल डेटाबेस यूज कर लो, जो सिक्वलाइट डेटाबेस होता है, ठीक है। आपके पास रेजोनेट डेटाबेस होता है, बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। कौन सा डेटाबेस कब यूज करना है, किस लिए यूज करना है, कैसे यूज करना है, दैट आई विल बी टेलिंग यू इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है। बिकॉज कुछ एप्लीकेशंस आपकी प्राइवेसी फोकस्ड एप्लीकेशन बनती हैं, ठीक है। अब प्राइवेसी फोकस में ये होता है कि भाई डेटा कभी भी आपका सर्वर पे नहीं जाता है, ठीक है। आप उसको अपने पास ही, लेट्स से यूजर का डेटा है उसके मोबाइल ऐप में ही या उसके लोकल एरिया में ही परसिस्ट करके रखा हुआ है, तो वो कैसे करना है, ठीक है। हम वहाँ पे सिक्वल डेटाबेस यूज करेंगे, कैसे करना है, कोई एक छोटा एप्लीकेशन बना के भी विल सी, वो सारी चीजें, ठीक है। तो दैट दिस मॉड्यूल इज रिलेटेड टू आपका वो वाला डेटाबेस वाला पार्ट, ठीक है। इसके बाद देन वी हैव सबसे इंटरेस्टिंग मॉड्यूल अपना फुल एप्लीकेशन बिल्ड करने का, ठीक है, दैट इज अ कैपस्टोन प्रोजेक्ट, ठीक है। अब ऐसा नहीं है देखो कि भाई अपने ऐप में वी विल हैव ओनली अ सिंगल एंड अ मेजर प्रोजेक्ट, ऐसा नहीं, ठीक है। ईच एंड एवरी मॉड्यूल विल कंसिस्ट अ स्मॉल एप्लीकेशन,
ठीक है, बिकॉज मेरा पढ़ाने का तरीका इस थोड़ा डिफरेंट। मैं हर आपके मॉड्यूल के साथ एक छोटा प्रोजेक्ट बना के ही समझाना प्रेफर करता हूँ। ठीक है, कि भाई अगर नेविगेशन भी है तो कैसे रहेगा, नेविगेशन का फंडा ऑथ में कैसे रहेगा। ठीक है, अगर आप अगर आप यूआई बना रहे हैं तो लेट्स से एक छोटा एप्लीकेशन, ठीक है, जो कि आपका थीम स्विच कर पा रहा है, बैकएंड इंटीग्रेशन में आपका एक टू डू एप्लीकेशन काइंड ऑफ चीज कैसे करना है। ठीक है, डेटाबेस वाले में आप डेटा लोकली कैसे मैनेज करो। तो हर मॉड्यूल विल हैव अ स्मॉल इंडिविजुअल, एक छोटा छोटा प्रोजेक्ट। ठीक है, एंड देन सबसे एंड में वी विल हैव अ कंप्लीट कैपस्टोन प्रोजेक्ट। ठीक है, अब इस कैपस्टोन प्रोजेक्ट में व्हाट बेसिकली वी आर गोइंग टू डू इज, वो मैं समझा देता हूँ। ठीक है, मैं 2 से 3 प्रोजेक्ट का आई विल बी शेयरिंग लिस्ट, एंड देन उसमें से बेस्ड ऑन मेजोरिटी ऑफ वोट वी विल बी पिकिंग एक प्रोजेक्ट, एंड देन उसके ऊपर हम लोग बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब दैट कैन बी एनी प्रोजेक्ट कि भाई आई ऑलरेडी हैव अ बैकएंड एपीआई, इफ यू वांट टू एक्सटेंड दैट उसको मोबाइल पे, कि हाउ वी आर गोइंग टू बिल्ड एक ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म समथिंग सिमिलर टू मीडियम या डेव टू, बट एक मोबाइल पे, वो कैसे रहने वाला है। ठीक है, एंड देन उससे रिलेटेड अपने को क्या क्या फीचर्स इंप्लीमेंट करने हैं, लाइक ऑथेंटिकेशन है, यूजर प्रोफाइल है, डैशबोर्ड, ठीक है, कैसे रहने वाला है, वो सारा चीज विल बी एडिंग मॉड्यूल 7 में। ठीक है, अब इसके बाद भी है सबसे इंटरेस्टिंग सेक्शन, नोटिफिकेशंस का। ठीक है, जैसे आप बहुत सारे एप्लीकेशंस आप लोग यूज करते हो। ठीक है, तो उन एप्लीकेशंस में नोटिफिकेशन कैसे आता है। ठीक है, जैसे आप जोमेटो यूज कर रहे हैं, जोमेटो में नोटिफिकेशन आता है कि भाई आपने कोई लेट से मील ऑर्डर किया, उसका नोटिफिकेशन आ गया। राइडर आपके घर के पास आ गया, आपका ऑर्डर डिलीवर हो गया, उसका नोटिफिकेशन आ रहा है। ठीक है, चैट कर रहा है कोई, आपका व्हाट्सएप बंद है, उसका नोटिफिकेशन आपको आ गया। तो वो नोटिफिकेशन कैसे काम करता है, हम लोग जब नोटिफिकेशन क्लिक क्लिक करते हैं, सपोज मेरे को इमरान ने हाय लिख के भेजा व्हाट्सएप पे। ठीक है, तो मेरे को नोटिफिकेशन दिखता है, मैं उस पर क्लिक करता हूँ, तो व्हाट्सएप का सारा चैट नहीं खुलता है, सिर्फ इमरान का स्क्रीन खुलता है। ठीक है, चैट करने वाला, वो कैसे ओपन होता है, वो स्पेसिफिक स्क्रीन आप कैसे ओपन करते हो, वो सारा कुछ वी विल बी हैंडलिंग इस पुश नोटिफिकेशन वाले सेक्शन में। ठीक है, उसके बाद वी हैव पेमेंट का सेक्शन, कि भाई हम लोग अपने मोबाइल एप्लीकेशंस के अंदर पेमेंट को कैसे हैंडल करते हैं। जैसे ऐप को मोनेटाइज करने के मल्टीपल तरीके होते हैं। आप सब्सक्रिप्शन ऐड कर सकते हैं, आप वन टाइम पेमेंट ऐड कर सकते हैं, आप कुछ एड्स चला सकते हैं। ठीक है, कि भाई यूजर ऐप फ्री में यूज कर रहा है बट उसको एड्स दिख रहे हैं, वो आप ऐड कर सकते हैं। इन ऐप परचेज, जो खुद का एप्पल का जो इन ऐप परचेज है, गूगल का जो इन ऐप परचेज है, उसका थोड़ा आइडिया, उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, दैट आई विल बी टेलिंग। ठीक है, कूपन एंड रेफरल सिस्टम का कैसे होता है आपका इन ऐप परचेजेस में। ठीक है, या कोई आप मोनेटाइजेशन की चीज यूज कर रहे हैं तो उसमें कैसे आप इंप्लीमेंट करते हैं, वो हम लोग समझेंगे इस वाले सेक्शन में। ठीक है, बिकॉज मेजोरिटी ऑफ जो आपके एप्स होते हैं, ठीक है, दैट इज आपका रिलेटेड टू पेमेंट्स। ठीक है, बिकॉज दे हैव पेमेंट्स इनेबल्ड इन योर एप्लीकेशन। ठीक है, देन इन मॉड्यूल 10 वी हैव टेस्टिंग। ओके, like what are different type of testing in mobile application. Okay, we have unit testing, we have component testing. ठीक है, what is unit testing, what is component testing, what is the difference, how do we implement end to end testing. I will give intro of that. Okay, what is linting, formatting, how do you implement all these, good practices like linting, formatting, commit management. Okay, how to fix bugs. So all these things we are going to handle in this module 10. Okay, which is mostly related to testing. Then we have some performance module. Okay, in this performance module, basically we are going to handle all performance related stuff. Let's say how are you going to test whether if your app is working slow. Okay, if it is not working well, how to fix. How do you handle image optimization? What are security practices like while handling token, while handling payments, and other stuffs. Okay, then we have module 12, which is mostly related to deployment. Okay, since we are building mobile application, okay, and it is going to be a cross-platform application. Okay, that works both on your Android and your iOS. Okay, so how are we going to make APK build of our mobile application? How we are going to create application on App Store? How we are going to create application on Google Play Store? What are the things required, certificates and other stuff that we are going to handle in this. How are you going to test your mobile application, because testing a mobile application is little bit weird
Okay, to be honest, for both the Google and your App Store. Okay, and there are certain policies that each and everyone has to remember. Okay, then we are going to handle CI/CD part. Okay, because not every see the major problem is not every time a developer is going to create a build and then he's going to submit your application on App Store. Okay, so we have a CI/CD mechanism as well. So you just create your own branches, you merge them into master branch. Or let's say someone don't know GitHub. Okay, so there is branching concept. Okay, so when your branch is getting merged into your GitHub repository, okay, then we have automatic runners. Those take that code, they create a build, they submit your application on Play Store or App Store, whatever you want to implement. Okay, because some do both App Store and iOS development. Some just publish on App Store, some just publish on Google Play Store. So totally depends on them. Okay, but yeah, we are going to learn this CI/CD mechanism. Okay, what are the different ways of using CI/CD? There are some free services, there are some paid services. GitHub also offer their own CI/CD service, that is GitHub Actions. How we are going to handle that? What is versioning? How in case of mobile application? Okay, because when you open mobile application, you have seen version 1, version 1.0.1, version 2. Okay, so how we are going to handle all these versionings? Okay, so that all we are going to cover in this module 12. Okay, that is related to your deployment. Okay, then we have last second module, that is module 13, which is mostly related to analytics and observability thing. Okay, see, we are going to use Firebase. Okay, and Firebase has some analytics tool. How see how many users we have on our mobile application, how to implement this crash thing. If your application is getting crashed, then we are storing all information in crash analytics surveys. Okay, so we are going to cover that particular part in this analytics portion or analytics module. Okay, and then we have some extra module, which is module 14. That is majorly related to deployment only. Okay, but this module mostly cover how we are going to create our screenshots, preview video, and feedbacks. Then we have App Store optimization, because anyone can publish, right, their applications on uh, Android, this Google Play Store or this Apple App Store. Okay, but then we have something known as App Store optimization. Okay, so your app can reach to wider audience. Okay, how we are going to do that? So I will give you some intro about that particular thing. So these are the things we are going to cover in our entire application, this mobile application course. Okay, so this is yeah all what all we are going to cover in our entire course. So now let me know if you guys have any doubts or if you want some clarification. Okay, if you have some doubts related to mobile development, why React Native, why not, then uh, please share your doubts in chat. I will be taking that. And then we will start some small things. I will tell you what tools to add, how do you set up these mobile development things. Okay, let's take some doubts first of all. So if you have some doubts, you can share in chat. I will be taking all those doubts. Mm. Okay, so we have 14 part students, right? Okay, how many of you are from tech background? I want to know that thing first of all. What is prerequisite? See, prerequisite for this course is you should know JavaScript and you should know basic React. Okay, prerequisite is JavaScript. That is for sure. But if you are well versed with basic React, that is good. If not, we are going to cover although React. But yeah, if you know that is well good. How can we earn from apps, Google Play Store? See, it depends what kind of app you are building, to be honest. If you are building a game
Then maybe you can implement subscriptions. If you want your application to be free, then you can implement ads. Okay. Then you can earn from those ads. If your application is a service-based platform, then you can implement other payment mechanisms. That is how you can earn. You can make ad, you can create a service-based application, or a simple application that solves some real-world problem. Okay, those you can build. So if you are using those applications, then you can easily monetize those applications. There are multiple ways to monetize your application. Mm, Uh, guys, please share your doubts if you have related to this course. If not, then I will be start to Uh, tell what all uh, tools are required. Yes, Hi, yes, sir. Neeraj. Hi. Yeah, so are you going to show us like how to publish our application in the App Store and the Google Play Store? Yes, yes, I will be Okay. showing both Android and iOS. But there is also one catch that you guys also like you guys should also have both the Google Play Store account and App Store account, so you are able to publish at your end as well. Yes, sir. Actually, basically, I'm looking for that only. Like, I'll be however the payment is there, I'll make it, and I want to publish the applications in both the store. Mhm. Okay. Also, let me be honest with you. Okay, Google deployment is very easy. Okay, deployment of mobile application pretty easy on Google because the fee they charge is $25 for lifetime until and unless your app is getting banned. Okay, your account is getting banned. Till then, you don't have to pay anything. Okay, but when it comes to deployment on iOS for App Store, it is $100 an year. Okay, these classes on weekend. These classes are on weekends, Saturday and Sunday, 7 to 9. We please have these classes only on weekends. Okay. 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 So basically, yeah, the cost of publishing the iOS apps is now on iOS is $100 a year, and on Google Play Store it is $25 for lifetime until and unless your app is your account is getting banned. Okay. Yeah. That. Okay. And also one important thing, both the App Store and this Google Play Store and your iOS App Store both has a different review process. Okay. Try to understand this as well. Both has a different review process. It is see. Let me also tell you one thing. Now, deployment on these both platforms, it is pretty much different how we deploy a web application. Okay, web application is pretty simple. If you have Vercel, you have AWS, you just push your pipelines are running if there are some. Okay, and you can see your changes live. Okay, but in case of mobile application, it is pretty different. You create a build, you push them. There are some stages for Google Play Store. There are some stages for App Store. They get reviewed. Okay, they're both review process different. So your application goes through different process. What advanced JS feature we must know? See, basically in JavaScript, now you should know variables, functions, loops, ES6, and asynchronous JavaScript.
also error handling. Okay, these are the things you should know in terms of JS. But if you want to understand about React, then in React you should know what are components, how do we create component, state management, hooks. If you are comfortable with it, although I will be telling you, but these are some basic details for React. Okay. Mm, guys, share more doubts. These two, three questions are not enough when you uh, want to do mobile development. Because mobile development is pretty interesting. And if you are not having any doubts, then how things are going to work? Okay, let's see if we have some other doubts. One more thing, like Mhm. there is some concept of web view, right? Like we Yes. can host in our mobile application for like Android and is for iOS also, can we host similar kind of thing? You want a web view in iOS, right? Yes. That is possible. We have web view for both Android and iOS. Okay. So will you be teaching that one in any of our curriculum? That is already there, na? That is going to be part because there might be something that will not, that might require web view. So that is going to be there. Although it is not a very, that complex thing, it is pretty simple and easy. But yeah, I will be sharing that as well. Okay. And hosting of our backend. So we'll be writing in our Node.js or No, we are not going to do any backend stuff in this course. oh, okay. We are either going to use Firebase or I already have a backend application written. Okay, it is a complete API which is written in Node.js. Either I will be sharing that and I will be telling you how to run that backend API. Similarly, then you guys can utilize that and run at your local system and then use it. So sir, you will be sharing the code as well of the Node.js Yes, application yes, or yes. I will be sharing code of that backend with the okay, complete okay. instructions how to run, how to host that. Okay, sir. Okay. Thank you. Where is Kotlin used during mobile application development? Is it for Android only? Yes, Kotlin is only used for mobile app development and more specifically for Android. Okay, if you want to build, let's say, native mobile application, let's say if you just want to do Android, if you just want to do iOS. So for Android, you can use Kotlin. Earlier it was Java. Okay, now it is Kotlin. If you ask about this iOS development, then there was Objective-C earlier. Okay, but now it is Swift. So these are used for native development. But see, there is also one thing. Uh, Still, we can use Kotlin or you can use Swift in your React Native application if you want. Okay. I'm not saying these are not getting used in React Native. These are getting used, but they have different purpose. Okay. They both have different purpose. Writing natively and using Kotlin or Swift in your React Native application. Difference between React Native development and Flutter. Are we learning both? No, we are not learning Flutter. We are only going to learn React Native. And difference, let me tell you, see, React Native is basically your JS based, you can say, mobile application framework. Okay. Flutter, on the other hand, is entirely a different platform for building cross-platform application only. Similarly, how we write in React Native application. Okay. But React Native will be very easier if you are from, let's say, JavaScript background. Okay. Because here you only write JavaScript and TypeScript. Okay. But if you are from Flutter and let's say if you want to learn Flutter, then there is a separate learning curve for Flutter. Okay, first of all, you need to learn their own language, okay, which Flutter use to build a mobile application, that is Dart. Then based on Dart, you use Flutter.
Okay, and then you create mobile application. So these are both two different steps basically. For any JS or TS person, React Native is pretty simple and easy. Okay, because you are just extending your knowledge for mobile. Okay, and then there are some specific component which are different from web. But in Flutter, then you first learn React. Sorry, you first learn Dart, then you learn Flutter concept. What are components in there? Basically, they are known as widgets in Flutter. In React, we have components. Okay, what are widgets in there? How do you make API call and other stuff? So yeah, but yeah, here we are only going to learn React Native, which is more for. See, let me be honest. There is nothing which I can say which is popular. Okay, to be honest, Flutter, React Native, Kotlin, native Android development via Kotlin or Java, native iOS development via Swift or Objective C. Both or all of these solves their own specific problem. Okay, I cannot say which is popular or which is not, but each and every one solves a different problem. And similar thing goes for your learning perspective. Let's say if you want your application, which should be very good in terms of performance. Okay, its size should be very less. Okay, and you just want it for Android, or let's say if you want just it for iOS, then you can go to native side via Kotlin or via Swift. If you want cross-platform, you do not want to have a different dev team for Android and iOS, you can opt for, let's say, cross-platform development. You have Flutter, you have React Native, you have Xamarin. Right now we have KMM as well, Kotlin multi-platform, that you can use Kotlin for both Android and iOS as well. It totally depends what kind of problem you're solving and yeah, what excites you most. But although right now the trend is majorly toward React Native and Expo. So Expo is also a platform which you can use to build React Native application. Pretty amazing and pretty popular from past couple of years, I guess. Okay, guys, share more doubts, na? These two, three doubts are not enough in terms of mobile development. You should have so many doubts. Also, yes, I will be telling you a couple of tools which you need to install in your application, in your device. Okay, so make sure you install them. Okay, and then tomorrow I will tell you how you can do setup of all those things. Mm. Guys, share more doubts. And let me tell you the list of tools what are required. Okay. See, the first and most important tool which you need for mobile development or for any development, that is your code editor. Okay. You need a code editor that can be anything, VS Code, Cursor, Windsurf, WebStorm, whatever you like, you can use that. Okay. Code editor. My personal favorite is VS Code. So I will mostly stick to VS Code. Okay. Uh, we learn from scratch or we use Chat GPT. In this course, right? A question. See, in this course, we are going to learn each and everything from scratch. But when it comes to building mobile application, then I will tell you how you vibe code your UI. Not vibe coding entire project, but vibe coding UI. That I will tell you. Okay. Because UI building a very beautiful UI takes a lot of time. Okay. Setting margin, padding. Although I will be telling you all these things in class, okay, like what you do, how you do all these things. But while building project, it takes a lot of time. So we'll be by coding UI. That's simple. Apart from that, we are not going to use any GPT or any other thing. And not even I'm going to use already coded sample to teach you. Okay. We will be writing each and everything from scratch in the class itself. Okay.
Okay, let's see what other tools are required. Okay, first of all, code editor is required. My personal favorite is VS Code, so I mostly stick to VS Code. Then there are other tools required. Since we are doing React Native, so with React Native, you need to use JavaScript. And in order to run JavaScript in your local system, you need Node.js. So basically, you need Node.js as a runtime environment. Okay, so Node.js is prerequisite. And with Node, okay, with Node, there is also one more thing that is required, npm. Since you are installing Node, so npm will already be shipped with it. Node. Okay, these are the two things required. Then there are other tools which you need. Android Studio. Okay, Android Studio is very important while building a mobile application. Okay, because when we build a cross-platform application, so we also have to set up these native projects specific to Android, specific to iOS. So for Android setup, we need Xcode because there are a couple of things which are required. Some packages, some utility library, some helper things which are required. So they all are shipped with Xcode, this Android Studio. Okay. And with the help of Android Studio, you can also set up emulator. Okay. What I'm saying is emulator. Okay. Although I will recommend one thing that whenever you do mobile application, no matter if it is iOS or if it is Android, try to run these applications on your physical device. Take a USB cable, take your mobile, enable developer option. Although I will tell you how to enable developer option. Okay, enable developer option. Connect your mobile, run your application directly into your mobile. Okay, why? Because running on a real device will reduce load on your laptop or whatever device you are using. Okay, it can be Mac, it can be Windows device, it can be desktop. Okay, because if you are going to run your application directly inside emulator, okay, emulator is basically a simple virtual machine. Okay, a normal phone that will be created in your laptop, Mac, desktop, whatever you have. Okay, that consumes so much memory. Okay, emulator consumes so much memory. Okay, so try to run them. But yeah, of course, I will tell you how to set up emulator, how to run mobile application on emulator, how you can run on physical device. So all these things will be covered. Okay. So those who have a decent amount of memory, let's say 24 gig, 36 gig, 48 gig, they can directly run on emulator. It will create very less impact on resources. Okay, if you have less memory, let's say 8 GB, 16 GB, then try to run these on physical devices. Okay, similar thing goes for iOS as well. Okay, for iOS, let me be honest, I will be using emulator because I don't have iPhone, but I do have Mac, so I will be telling you on that particular part. Okay, then for iOS development, you need a tool that is Xcode. Okay, and Xcode alone is a pretty interesting and a pretty heavy software. Okay, it takes around, I think 7 to 8 GB it take to install. Okay, so if you have, you can set up Xcode. If you don't have, of course, I will be giving you intro about Xcode in the next session, that is tomorrow. Okay, but yeah, please make sure to at least download it. Okay, so that we are not downloading it in the class. Okay, we need Xcode. And then there is one more thing. We are going to utilize Expo platform. Okay, Expo is a separate independent service. Okay, that you can use to build React Native mobile application. Okay, let me log out from this. Okay, this is the Expo platform. Okay, that you can use to build your React Native application. Basically, let me tell you one more thing. Building React Native application has two different approach. One is you are using old school way. Okay, that is a CLI command. Similarly, how we used to set up, let's say, I'm not sure how many of you are well versed with create React app. Okay, that is a CLI command used to set up React application previously, but now we have Vite and other stuffs.
So similar to that, we have a React Native CLI command, which we used to set up React Native application previously. But since Expo has improved a lot, see, Expo is present in market from a long time. Okay, but since Expo was not optimized, or you can say was not good previously. Okay, so React Native CLI was getting used, but as of now, Expo has a lot of potential. So many big apps and large applications, scalable applications are built using Expo. So it has a lot of potential. Okay, and it has improved a lot. Trust me, a lot, because I've used Expo in its earlier days. It was pretty bad, very bad. Okay, but now it has improved a lot. So you can use Expo. Okay, they offer each and everything. Okay, building a small application to building a complex and a scalable application, they offer each and everything. And also they tell you like what all applications are built using Expo, so you guys can check out that as well. Okay. Now see, since Expo offer you a simple command to set up application, okay, but now they have created their own ecosystem. Okay, you can create a project, you can link your project with their cloud platform, you can create a deployment, you can build your APK for both Android and for iOS. Each and everything you can do directly in the Expo platform. Okay, so I will be telling you how to create account, how to create project, how to link, how to create a deployment for both Android and iOS, how you can create APK, each and everything I will be telling in for regarding this Expo platform. Okay, so yeah, if you want, you guys can create your account on the Expo platform. So right now, these are 5 tools and you can say other things which are required in order to start. But rest, there are other things as well, which we will see, like what all is required, we will be setting up directly in the class. Okay. So if you guys have any doubt regarding these or any other doubt, you can ask. Let me take some more doubts. For backend, should I revise concept of Node or React? See, question for you can revise a React concept. Let's say basic React concept. How do you create component, state, API calling methods? Okay, like fetch, XCOs. These kind of basic concept you can revise, but apart from that, you don't need to revise backend. Since I'm not going to teach backend, okay, I just have an API. I will be sharing that. If you want to set up in your local system, there is uh, all instructions written. You can use that. If you guys don't want that those instructions, then I will simply deploy that API in my free time, and I will be sharing the link. You guys can use that. But yeah, you don't need to understand node concept. You just need basic React if you want. How much RAM is required? Oh my God. Guys, to be honest, see, if you want a real, this is a very tricky question in case of mobile development. And to be honest, see, if you have 8 GB RAM, try to use your physical device. It can be iPhone, it can be your Android phone, and then you can directly code application in your device, whatever it is, Mac or let's say Windows laptop. Okay, because so many have 8 256 gig of Mac. Some has 16 256, which is the latest variant. I mean, not the latest variant, but the latest config, 16 256. Some has a Windows system which has 8 gig and 512 space. Some has a 16 512. Okay, so for these, I will recommend try to use emulator or any spare. Sorry, not emulator. Try to use any spare phone if you guys have. Okay, because if you are like directly going to run emulator, then it will consume so much resource. Because while setting up emulator, you need to specify how much RAM you need to give to that emulator. All these things are required. But if you have 24 or more than 24, feel free to run in emulator. But see, personally, I have seen uh, 32 GB also getting consumed while building both Android and mobile iOS application. So question about RAM is pretty interesting and pretty, pretty interesting. I heard that mobile development is difficult, but deployment is even more challenging. Yes, 50-50. Mobile development is not difficult. Okay. Deployment is difficult. Let me be honest why I'm saying.
Process is exactly same. How you build web application, you similarly build mobile applications. There is concept of screen, there is concept of component, there is concept of API call. That's it. But when it comes to deployment, that is very challenging part. I will not sugarcoat. Okay, some of you do not buy Google Play Store account. Some of you don't buy Play Store account or the App Store account. That is a different thing. Okay. Now the second thing is their deployment policy. I will tell you how you can create a build. That will not take so much time. Hardly, I guess, 20 minutes, 25 minutes, based on your device config. By device config, I mean your laptop or your Mac config. Okay, because while creating build, these things take time. Okay, but when you upload your application, your APK or your app store, whatever your iOS app you have built to those platforms, and then you start submitting for production build. Now their policies are different. Let me tell you why. App Store. See, there are two stores. Google Play Store, App Store is for iOS. App Store has a very strict checking. They need each and everything in a very detailed manner. You need to answer each and every question. You cannot hide anything. If you hide, your application is rejected. The number of rejections you have, the later your app get in review again. Google Play Store has a different policy. Now policy is different because both App Store and Google Play Store allow you to create individual account as well as organizational account. Means someone from organization can register, right? Okay. Registering an individual person means suppose I'm an individual person, I can register. I will provide my PAN card or whatever document they need to verify me. I will pay $25 fees. Then there is organization account. You upload organization documents. Suppose I'm not sure about how companies are, what documents company have outside India, but let me tell you about companies in India. There is a certificate of incorporation. Then you have MOA, then you have AOA. Okay, so these documents can be asked to verify your organization account. If you are an organization owner, you can create those. Okay, organization account has a very less chances of the very less chances to have complex policies. Okay, but if you are dependent on your personal account, then there is very strict policy. You need to have 12 testers who will test your application for 14 days continuous. So Google can track, okay, each and everything, how your app is getting used, whatever. Okay. Due to this strict policy, so many apps are not getting released in market. Okay, this is a strict policy for personal account. Okay, so I'm also not able to release any of my personal apps. Okay, and neither I don't want to. Okay, because I don't have patience of waiting 14 days and I will remind each and everything. Okay, please test my app, please test my app. Then there is a very easy approach going to organizational account. Okay, you create your application, you push your application, you can add your organization member. Let's say I have a team of 5 developers. I will add them. I have a team of 3, suppose QA testers. I will add them. They will test their application. Once each and everything works fine, I will push my application to production. It will have very less, policies, you can say. Okay, but then on the other side, App Store deployment process is a little bit difficult. They need each and everything to be shared in detailed manner. Okay, there are more manual reviews, you can say. So yeah, deployment is pretty difficult, but development is not. Because I have seen, because I have taste of both side. Okay, having individual account, having organizational account. I've seen both side. What is NPM for? How one can relate to Java? What is NPM, right? You can say NPM is like Maven. For a Java project, you need a centralized place where all you can say your dependencies are present. For let's say your Node application, or for let's say for any of JavaScript application, similarly we have npm. You can say package managers, exactly similar to Maven.
Is there any feature like manage sync from where I can push latest update on all devices if we haven't done that? Is there any feature like manage sync from where I can push latest update on all devices? See, once your application is built, it is working perfectly fine. Then on Play Store, on both side. Okay, there is a way you can roll out your application. You can roll out 100% of your application. You can roll out your application to, let's say, some specific user. So that is present there. Let's say you want only 10% of audience to have your newer update. You can push them. This is mostly used when you want to perform A/B test. Okay, let's say I have a phone. I have two devices, suppose. On one, when I see Instagram, it is pretty different. On with new update, when I check Instagram on other on the second device, it has the old version. So that you can do for A/B testing. It is present there, like more than 2,000 device which we purchased for installable apps and those so forth. There is. I can check it. Like more than 2,000 devices which we purchased. Yeah. Okay, install. And those. Yeah. So, like, what do you want to manage in this? हेलो। This I'm not. Yes, yes. कैन आई आस्क यू? एक्चुअली में मेरे ऑर्गेनाइजेशन में एक ऐप डेवलपमेंट हो रहा है जो कि इंटरनल यूजेस के लिए होता है, राइट? Mm-hmm. तो थ्रू आउट द इंडिया मतलब अराउंड तो 5 to 6 thousand डिवाइसेस पे वो ऐप इंस्टॉल होगा। मैं प्ले स्टोर या इन सब से थ्रू नहीं जाना चाह रहा हूँ। Mm-hmm. तो मैं चाह रहा हूँ कि उन जितने भी डिवाइसेस हैं जो हम उनको अपने हिसाब से यहाँ पे कोई ऐसा कुछ होता है मोबाइल ऐप में कि सो दैट हम उनको मैनेज कर सकें। सपोज मुझे कोई अनाउंसमेंट आया है, मैं वाई Mm-hmm. प्ले स्टोर ना जा करके कुछ पुश मैकेनिज्म हो सो दैट कि वो उन पे अपडेट हो जाए, या फिर हमारा उनका प्रॉपर यूजेस कैसे क्या और इस तरीके कोई कंसोल टाइप का कुछ इस तरीके होता है क्या? मतलब वी नहीं डोंट ऐसा प्लेटफॉर्म लाइक मतलब प्ले स्टोर या समथिंग। नहीं ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, बट द थिंग विच आई टोल्ड ना, दैट इज रोल आउट। बेसिकली आप लेट्स से कोई ऐप कुछ हो ना, तो आप उसको रोल आउट कर सकते हो टू सम परसेंटेज, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट इस टाइप का देयर इज नो प्लेटफॉर्म। नहीं नहीं, तो मैं प्ले स्टोर नहीं यूज करना चाह रहा मैं सपोज तो मैंने अपना ऐप बनाया अपने पर्सनल डिवाइसेस पे नहीं, कर दिया। आउटसाइड ऑफ दिस आई हैव नॉट यूज्ड एनी एक्सटर्नल प्लेटफॉर्म इस टाइप का। नीदर आई हैव हर्ड अभी तक, बिकॉज इस टाइप एक्चुअली का हमारे यूज केस। ऑर्गेनाइजेशन में क्या विदाउट प्ले स्टोर भी लोग कर रहे हैं। जैसे क्या है, हमारा जो हमारे सर्वर से कनेक्टेड हो जाता है जो भी कोडिंग किया जैसे भी, राइट? तो जो भी चेंजेस आते हैं तो वो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि हम प्ले स्टोर वगैरह यूज नहीं करें। हम अपना जो है पॉलिसी के कारण हम प्ले स्टोर यूज नहीं करना चाह रहे। कुछ ऐसा मैकेनिज्म होता हो कि सो दैट यहाँ से पुश कर दें जहाँ भी जितने हमारी डिवाइसेस उनका आईपी वगैरह हमारे पास होता है, तो जो भी चेंजेस आए तो ऑटोमेटिकली पुश हो जाए उन पे, और सो दैट कि बार बार इश्यूज ना आए कभी चेंजेस हाँ हुए। हाँ, दैट दैट इज अ सर्विस। ओटीए अपडेट्स होते हैं बेसिकली, है ना, वो आप पुश कर सकते हो बेसिकली, है ना। बट इस टाइप का कंसोल और प्लेटफॉर्म आई हैव नॉट सीन। सर कंपनी पोर्टल की बात कर रहे हैं क्या? कंपनी पोर्टल से, कंपनी पोर्टल के थ्रू। हाँ हाँ, वो नहीं, कंपनी पोर्टल, पोर्टल कंपनी उनके लिए पोर्टल। होता है जो, हाँ, उस टाइप का जो कुछ होता है जहाँ हम लोग भी अपने ऑफिस के लिए यूज करते किया करते थे। वहाँ से ऑथेंटिकेटर वगैरह ऐप वगैरह होता था, उसकी बात कर रहे हैं। हाँ, तो वही मैं सोच रहा था अगर इस कोर्स में इस तरीके का कुछ कॉन्सेप्ट है इनबिल्ड सो दैट हम लर्न कर नहीं, सकें। ऐसा इस कोर्स में तो नहीं। इट इज मोस्टली लाइक बिगिनर फ्रेंडली टाइप का एंड टू इंटरमीडिएट टाइप का, नॉट दिस मच एडवांस। अच्छा अच्छा, ओके, थैंक यू। ठीक है, और बताइए और किस किस का डाउट है? लेट मी टेक ऑल दोस डाउट्स। Okay. Okay, let me know who all have doubts. I will take all those. And uh, then from tomorrow we can start our course, basically.
आशीष, इमरान, जितेंद्र, कौशल, महेश, सरफराज, शुक्ला, सुनील, आप लोगों को किसी पे कोई डाउट हो तो बताइए। और भी लोग जो हमारे पास मतलब जुड़े हुए हैं अगर प्लेटफॉर्म से, अगर आप लोगों को भी किसी को डाउट्स है तो बताइए। विल टेक ऑल दोस डाउट्स। ओके, तो अगर किसी को डाउट नहीं है तो लेट्स कीप दिस इंट्रो सेशन यहीं तक। ठीक है, देन कल से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अपना सारा कुछ इन्वायरमेंट सेटअप, ईच एंड एवरीथिंग, मेक श्योर कि आप लोग अपना अकाउंट बना ले। इफ यू डोंट हैव ऑल दीज टूल्स तो आप लोग ये टूल्स वगैरह सेटअप करके रख लें। ठीक है, जो जो अकाउंट रिक्वायर्ड है एटलीस्ट आप लोग डाउनलोड करके रख लें। ठीक है, सेटअप भी ना करें तो देन फ्रॉम टुमारो वी ऑल कैन स्टार्ट सेटिंग अप ये सारी चीजें, चीजों को समझना फ्रॉम स्टार्ट। ठीक है, फिर देन वी विल स्टार्ट ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, is it clear or some of you have doubts? Then let me know. Also, let me remind again, there is no prerequisite, but apart from JavaScript, okay, if you know basic React, that is well and good. If you know advanced React, that is also well and good, but at least you should know JavaScript. Okay, React, I will be teaching here. What is React? How do you create state, hook, other stuffs. Okay, then let's keep this introduction session till here only. Okay, do let me know if you guys have doubts. If not, then maybe we can maybe we can end our session here only. Do let me know, guys, if you have any further doubts. We'll take that, or we should end the class of the introduction session. Hmm. Okay, bye everyone. Then let's meet tomorrow class. Okay, बाय with सर। the first class of your batch. That is environment setup. Bye.